Pepper Prasad. Pepper Prasad, California pepper. California pepper, huh? Uh-huh. Summertime That's right. California foods and produce. That is so nice. Yes, California is the best place to be in the summertime. But the only problem is What's wrong right with BC in now, summertime? huh? What's wrong with best place in BC to be in BC summertime? अभी सब धुआं है सब जगह अभी यहाँ पे. Hey, that is still true, no? Yeah. Tell me about it. Yeah, lots of wildfires. Like, I mean, it's so crazy. It just, it's sad to me. I feel like, BC, across Canada, actually, I feel like everybody's getting hit with wildfires. Saskatoon, Osoyoos is now having wildfires, right? So it's sad to hear that. But apparently the smoke is coming towards us. It is very sad. And then जब भी ये ऐसे कुछ natural disasters होते, lightning is a big cause for this as well. और साथ साथ में जो लोग कैंप करते हैं, fires अपने नहीं extinguish करते हैं, और जो लोग हैं cigarettes पीकर भी पी देते हैं. Yeah. And it happens so often. हम सोच के हंसते हैं कि people still do things like that. But कभी कभी आप हाईवे पे ट्रेवल करो तो जो हाईवे के बीच में जो मीडियन होता है जहाँ पर कभी लेंस थोड़ी बहुत ग्रास या लैंडस्केप होती है, काफ़ी दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, तो जो ग्रास है वो बहुत ड्राई है and it's very very flammable, ना? Yeah. So if you flick a little butt out of your car, it can cause a lot of havoc. It So does. please be careful. अगर कहीं पर भी जाए, and summertime हम चाहते हैं कि हम जाए outdoors घूमें, कैंपिंग करें, फिशिंग करें, या जो भी आपका फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो करने की कोशिश करते हैं ना. बट ये भी ख्याल रखें कि जब आप वहाँ से लौटे, पैक इन एवरीथिंग यू पैक्ड आउट. जो कुछ आप वहाँ पर ले गए थे, जो जितना भी गाबज है, जितना भी आपका सामान है, उस तरह मत छोड़ कर आ जाओ कि somebody else will take care of it, ना. जो आपका गाबज है, keep it clean, keep it tidy. Other person that comes to use it, उनको भी अच्छा लगे कि अच्छा कितना सफा जगह पर हम आ गए. Yeah, it's true. I hit the mountains almost every day, and today too. And it's so dry in there. It's really, really dry, Burnaby Mountain. So hopefully, and there are big signs, no smoking on the paths, nothing like that. So hopefully, people are respecting that. And if you are, please make sure don't put it out. Make sure you're putting it out properly. Before you throwing, हाँ. Yeah. जो designated smoking area वहाँ पर smoke करें, या smoking ही नहीं, अगर आप छोटी मोटी barbecue करना चाहें, वैसे तो जो open fire है, wood fire, उसका तो ban अभी है, पर फिर भी वो propane allow कर रहे हैं, but propane से भी आग फैल सकती है. Be careful how you use it, किस जगह पर यूज़ करें. बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं, या ऐसी जगह ना यूज़ करें जहाँ पर छोटी सी हवा से झोंके से कुछ चीज़ में जैसे कागज़ या कपड़े में आग लग सकती है. Stay away from those kind of stuff and just be careful out there. It's very hot, hasn't rained for a while. A lot of people are getting dehydrated. जो अपना हेल्थ है, छोटी छोटी बातें इन पे ख्याल कीजिए ना. और वैसे Praveen, you mentioned Burnaby Mountain. Do you go hiking there a lot? I do. I live in Burnaby, so for me it's not very far. But I do. I work evening shifts, so it's nice to get out early in the morning. I do stairs. I do the Velodrome trail, which is 500 plus stairs. It's Wow, steep. wow. It's steep. It's side of the mountain. It's nice. It's very woodsy. It's so therapeutic, It's not like the Coquitlam Crunch, nothing like that. It's Coquitlam Crunch is I think platforms of stairs, and this is a little bit different. So it's on the side of the mountain. It's really pretty. You get the nice view of the water, so it's really nice for art in that. बिल्कुल हाँ. For my very first time and as far as मेरे ख्याल से first time Sunday को I went there for the very first time on Sunday and I found it really really good. I want to go walk the trails there, and then I've been told लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर trail walking के लिए, but चलो कोशिश करेंगे कि किसी दिन. और health wise अगर हम बात करें तो कोविड के जो शॉट्स है, a lot of people are getting the second shot, which is very very good. और ये भी खुशी हुई जान के कि काफ़ी restrictions open हो रही है. और exciting बात ये है कि 9th of August से Americans can travel into Canada, ना. Yes. The border opens up finally. अभी हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन at least our buddies and friends can come over from America
and visit us over here. Yeah, joy. It is happy Georgia. And then I was surprised to find out as well. एक और ऐसी बात आई है कि कनाडा यूएस बॉर्डर मेरे ख्याल से सुमस बॉर्डर या एबसफोर्ड बॉर्डर एबसफोर्ड इज सुमस बॉर्डर वहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अमेरिकन पीपल और कैनेडियन पीपल दे कैन गैदर विदाउट पासपोर्ट ये कॉमन नो मेंस लैंड है people would come and visit their families and friends over there and then drive back to their respective countries. Yeah. Apparently there's a park. I don't know. आपको मालूम है? The park? Yeah. It's right by the border somewhere. Yeah, it's right by the border somewhere. I've seen pictures of it. I am not aware of which park it is. I don't know. There's Peach Arch. Sorry, not Peach. Peace Arch. Peace Arch. Yeah. There's a Peace Arch Park that's really pretty, but I'm not 100% sure where exactly that is. But I have seen pictures of many families getting together there. Yeah, I'd like to find out. It's really good. At least something like that is still happening, huh? Yeah, exactly. It's really nice. And it's kind of nice to see things kind of get back to normal. I just hope that people are taking precaution and, I hope they are getting vaccinated. I mean, it's not for everybody, to each their own. However, I think it's important because there are several variants now that are on the go. So just be safe. Even though you have your vaccine, you still got to make sure you take the proper measures, wash your hands, wear the mask where you need to wear the mask, still keep your social distancing. What do you think? What are your thoughts? I'm happy that ये कोविड की जो ड्रामा थी मेरे ख्याल से it's finally coming to an end. It's very good to see and kudos to a lot of people. बहुत लोगों के लिए बहुत difficult time थी. They went through a lot during this time and आप सभी ने you did your part. Everybody did their part and they came out winners, ना? Which is very good. It's very good to see people stay strong and continue to remain strong and work together to help everybody come out of this and just say to COVID enough is enough and let's get back to normal. जो भी हमारा normal हो इस समय, we're enjoying it, we're loving it and hopefully this doesn't end. तो चलो दोस्तों आप सब जुड़े हैं रेडियो बुला मस्ती के साथ में कहानी घर घर प्रोग्राम पे. चलो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. इस कमर्शियल ब्रेक से या कमर्शियल पार्टनर्स ही है जिसके कारण हम ये रेडियो और ये प्रोग्राम्स आपके पास ले पा रहे हैं. एक छोटी सी ब्रेक दोस्तों, उसके बाद में हम सब आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे. Pranita Chand, top real estate agent in the Lower Mainland. Pranita Chand आपको बताएगी कहाँ पर घर खरीदना, कहाँ नहीं, कब सही समय है, कब नहीं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, कहाँ ना करे, और अगर मोर्गेज भी प्री अप्रूवल कराना है तो प्रणीता चंद को आप कॉल कीजिए 778-872-4708 पर. प्रणीता चंद from city to city real estate. Pranita Chand, top real estate agent in the Lower Mainland. Pranita Chand आपको बताएगी कहाँ पर घर खरीदना, कहाँ नहीं, कब सही समय है, कब नहीं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, कहाँ ना करे, और अगर मोर्गेज भी प्री अप्रूवल कराना है तो प्रणीता चंद को आप कॉल कीजिए 778-872-4708 पर. प्रणीता चंद from city to city real estate. तो चलो वेकेशन पर चलते हैं. वेकेशन पर, लेकिन कहाँ? सोही वेकेशन ट्रेवल एजेंसी में बढ़िया डील चल रहा है. मेक्सिको पैकेजेस, जमैका, कैरिबियन क्रूजेस, पाकिस्तान, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में सोही वेकेशन हमको भेज सकता है. कहो मेरी जान, कहाँ चलेंगे? टिकट्स अभी बुक कर ले क्योंकि अभी टिकट और वेकेशन पैकेज प्राइसेस बहुत लो है. बस फ्यू मंथ्स में बहुत महंगी हो जाएगी. बुकिंग के लिए कॉल कीजिए सोही वेकेशन 604-503-0440 पर. पायल बिजनेस सेंटर में है एड्रेस 12899 80th Avenue, Surrey. sohivacations.com या कॉल कीजिए 604-503-0440 पर. सोही वेकेशंस, योर ट्रैवल पीपल. प्यार का सफर तो हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं.
सितारों पे ले चले? हाँ। और वो कैसे? निस क्रिस्टल एंड अमेजिंग ज्वेलरी में। यहाँ पर क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी ज्वेलरीज, जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स मिलेंगे जो आपकी किस्मत चमका देगी। ये हुई ना बात। पॉजिटिव एनर्जी, अबंडेंस, बेटर हेल्थ और फास्ट हीलिंग जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स के लिए अब सरी में ही। देर किस बात की है, चलो अभी चलते हैं। निस क्रिस्टल एंड अमेजिंग ज्वेलरी 1207088 एवेन्यू सरी। फोन नंबर 6047880807। वेबसाइट विजिट कीजिए nishca.com। निश क्रिस्टल्स एंड अमेजिंग ज्वेलरी। परेशानी ही परेशानी, अब ये सब परेशानी दूर हो सकता है। दुनिया के सबसे फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर और साइकिक अर्जुन देव के पास सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, जैसे कि डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, बच्चे के प्रॉब्लम, मैरिज इश्यूज। दुर्गा माता एस्ट्रोलॉजर और साइकिक अर्जुन देव स्पेशलाइजेज इन एनिमी प्रॉब्लम्स, जादू, ओबाया, evil spirits and gives lifelong protection. All religions are welcome, private and confidential. Call Arjun Dev at 604-445-8735, located at 86 on Scott Road in Surrey. Hello, this is Mandeep with Bula Kava Distributors. We import fresh kava from Fiji to Canada and distribute it to your doorstep anywhere in the world, Canada, internationally. From 112 gram bags, 224 gram bags to 448 gram bags, and new merchandise coming as well too. Tanawas, Sulus, Billows, everything Fiji. For all your fresh kava needs, visit bulakava.ca. bulakava.ca. अगर आप गाड़ी की तलाश में हैं या फिर अपनी गाड़ी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रेडिट का प्रॉब्लम है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, बस चले जाइएगा अब बसंत मोटर्स में। कार्स चाहिए, एसयूवीज चाहिए, मिनी वैन्स, ट्रक्स, स्पोर्ट्स कार्स इत्यादि, बस चले जाइएगा बसंत मोटर्स में और वो आपको जरूर मदद करेंगे। बसंत मोटर्स 16315 फ्रेजा हाईवे सरी में। मैं निकला ओ गड्डी लेके। NSDD बिल्डिंग मेंटेनेंस, कार्पेट शैम्पू कराना है, स्ट्रिप एंड वैक्सिंग, प्रेशर वॉशिंग, जेनिटोरियल सर्विसेज, हाउस क्लीनिंग, रेनोवेशन क्लीनअप, कंस्ट्रक्शन क्लीनअप, ऑफिस क्लीनिंग के लिए बस एक ही नाम याद रखिएगा, NSDD बिल्डिंग मेंटेनेंस। और जानकारी के लिए आप नील को कॉल कर सकते हैं 778-710-0364। The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. जी हाँ दोस्तों, रेडियो बुला मस्ती पर आप जुड़े हैं। मैं हूँ आपका होस्ट नलिन और मेरे साथ साथ में है कैलिफोर्नियन पेपर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, और जी हाँ, बात कर रहे थे वाइल्ड फायर्स के बारे में और कैसे कोविड के रिस्ट्रिक्शन हट रही है ना। तो साथ साथ में एक और अच्छी बात आ रही है, लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग टू ट्रैवल टू, और कुछ मेरे दोस्त भी है जो लौट कर कनाडा आ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कनाडा से बाहर जा रहे हैं। माई एडवाइस टू देम और टू माई फ्रेंड्स दैट आर गोइंग is no, there's so many beautiful places in BC alone to explore. जाकर वहाँ पर घूमो ना। I agree. I think that it's going to be a little scary. You can tell like things are starting to get back to normal. Traffic is crazy. That's the ये first बात thing. तो बिल्कुल ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि I do not like traffic and I stay away from traffic as far as I can. Yes. But last few days I had to struggle with it, and I call it struggle because I find the struggle to be real. But, How real? How far did you go? Down the street? I wish it was just down the street, but no, I had to travel for a couple hours. And Vancouver से बाहर निकल के जाना एक काम हो जाती है ना। मेरे लिए तो बिल्कुल patience नहीं है. I have no patience for traffic. So if I have to leave, I'll try and delay it or go as early as possible. तुम सुना, सब कोई सुन ले तुम्हारी बात। अब जान गए तुम, you're the one with the big truck that cuts in front of everybody, goes down the side streets and just to beat the traffic. I'll honk on the horn. Oh. I'll honk on the horn if you're driving slow in the left lane. I'll be that guy. गाड़ी के गुस्सा है। Yes, 100%. And no, road rage is never a good thing. I'm just joking. दोस्तों मजाक कर रहे हैं, but it's nobody's fault. जब traffic होती है, everybody is dealing with it. We have one person's frustration is not going to help solve it. ना उससे accident हो सकती है and make it worse for everybody else too. But Praveen, tell me कि आपके travel industry में how's the air travel going? आप बोल रहे थे कि people are getting very frustrated. बहुत frustrated हो रहे थे वो पहले.
कि delays है, wait करना पड़ता है. Is it improving at all? या अभी No, भी there's a बहुत lot of schedule changes. अभी भी? Even right now, there's a lot of schedule changes happening. A lot of shifting of flights. So it's really crazy. And then people are actually getting turned away and getting suckered into getting the wrong test when they're Really? abroad. Yeah, so make sure you check the websites, make sure you're checking the travel restrictions. And yes, if you are fully vaccinated with your second dose, then you can travel. Anybody can travel. You don't have to do the quarantine, but you still have to take the PCR test, right? So it's expensive. Those tests are not cheap, and it's not easy to get to a place to get those tests. So make sure you're taking the proper measures. It's not a good time to travel, for sure. They're making it quite difficult for people to travel, and I think they're doing that on purpose, just so people would take caution and think about before they get on the flight. And flights are running full. Just so you know, they are running full. They're not doing the social distancing on flights. So make sure you are very careful. बिल्कुल. And ये भी मुझे जब से कोविड हुआ I have taken a couple of flights, local flights within Canada, but and ये बात मुझे तो बिल्कुल नहीं बात है कि I have to sit there for 4-5 hours with a mask on. I mean, I won't be. But जो friends जैसे कह रहे थे कि जो travel कर रहे हैं, they are saying flights are running full capacity. Yes, they are. They're running full yeah. capacity. Make sure if you're traveling to another country besides the U.S., make sure you're checking the travel restrictions when you arrive into that country, because a lot of people are getting denied boarding. So, like, you can't go through the U.S. if you're going through certain countries. So if you have connections, make sure you're checking all that information before you actually board that flight, because a lot of people are getting denied boarding. बिल्कुल. And then I'll share a first-hand experience with you. मेरा नहीं, and somebody very close. कि and ये भी ख्याल रखिए कि जैसे जैसे variants आते रहते हैं, cases change होती है, these regulations keep on changing too. So always check on a very regular basis, travel करने से पहले, और जब travel कर रहे हो तभी check करें. So there's a person that traveled from Vancouver to South Africa, and he went through a couple of continents in South Africa. यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से Johannesburg जाने के लिए 22 hours का flight है. Within that time, he had to take 3 COVID tests, live in Vancouver, Amsterdam, and as soon as he got to South Africa, वहाँ से to go to, from there, Zimbabwe, Botswana, Namibia, he had to take another 4 or 5 tests, because वहाँ जाते हैं तो results होता है कि no, you'll get your results tomorrow, and then the tomorrow becomes the day after, today after, and then your test expires in 72 hours, right? Then you got to go back and pay another couple of $100. वहाँ फिर दोबारा टेस्ट लेना पड़ता है. So अगर travel कर रहे हैं outside the country, कहीं जाने की ज़रूरत है, तो always keep checking the regulations. वो change होती ही रहती है. Otherwise, you'll get frustrated and your travel will not be pleasant. Yeah, it's true. It's, and people are getting gouged. Like, you go to places like Mexico, and they know you have nowhere to go to take that test. They are going to play games. So just be super careful, be mindful of things like that it is happening. So just make sure, especially when you're going outside to another country, make sure you take all your precautions. Check the websites constantly, get there. Don't rely on other information. Check it yourself. Take the initiative to make sure you have all your right information. And that's very true. और हम बातें कर रहे, I don't know आप लोगों की ये केस क्या ख्याल है, but मुझे ऐसा लग रहा है कि last couple of years में जब हम information check करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे पहले आप किसी भी चीज़ की सर्च करो, किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करो, तो वहाँ आपको दुनिया भर की न्यूज़ मिल जाती है कि वो दो कीवर्ड्स है उससे रिलेटेड कितनी न्यूज़ है दुनिया भर में, वो 1-2 पेज में आपके पास आ जाती थी. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटली जब आप कुछ सर्च करो, यू डू नॉट फाइंड द सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. बहुत इन्फॉर्मेशन सीमित होती है. अगर किसी और कंट्री के बारे में सर्च करना है, रिसर्च करना है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है. ज़्यादा करके जिस एरिया या जिस कंट्री में आप है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती है. तो वो न्यूज़ अगर देखना है तो वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है, अगर मैं कोशिश कर रहा था यूरोप के बारे में देखने के लिए, जो दोस्तों यूरोप में वो अलग स्टोरी बताते हैं. वो बताते हैं कि हमारे न्यूज़ में ये चीज़ आ रही है, और जो हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वो देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलता है.
मैं इसलिए कह रहा हूँ जो अभी हो रही है हाल साउथ अफ्रीका रीजन में हो रही है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो रही है, और साथ साथ में जेमन में जो डिज़ास्टर आया था वहाँ पर लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, एंड देन अभी ओलंपिक्स भी शुरू होने वाली है, दैट्स वेरी गुड न्यूज़। वहाँ पर भी कंसर्न्स है कि क्या करें, शायद बीच में कैंसिल करना पड़े ओलंपिक्स को, क्योंकि वहाँ भी एक नए वेरिएंट्स आ गए। और साथ साथ में जो हमारे मदरलैंड है फिजी में भी ऐसे कुछ हालात है जो ठीक नहीं है, वहाँ से भी कुछ हम न्यूज़ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो न्यूज़ हमें सोशल मीडिया पे मिलती है, जो न्यूज़ हमें लोगों से मिलती है, वो बहुत वेरियस बहुत ज़्यादा वेरियस होती है कि असल में क्या हो रही है और जो हमें सुनने को मिल रहा है। तो इसी को क्लैरिफाई करने के लिए, इसी इशू को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे देश के एक बहुत ही खास मेहमान 7:30 से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिजी में वाकई में क्या हो रहा है, वहाँ की हालात क्या है, वहाँ के इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या है, कोविड की सिचुएशन क्या है, वो जो बहुत ही रिलायबल सोर्स है 7:30 के बाद में हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे और वो बताएंगे फिजी में हो क्या रहा है और क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और किसी तरह की जो हेल्प हो अगर हम करना चाहें तो कैसे सही ढंग से कर सकते हैं। सो प्रवीण ही विल जॉइन अस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो एक और प्यारा सा गीत हो जाए, गीत के बाद में हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे।